Okay, so we have almost finished all the manual Spring Core part with regards to the web XML. Okay, so now you all know how to create a bean, how to set the scope of the bean, how to auto wire the bean, all that we have done. Bean life cycle, okay, how to inject all the various types of data. Okay. So today we'll try to use a pure Java way of creating bean without using any XML. Okay, so let's follow the documentation using Java classes. Okay, I'll keep it aside over here and we'll see what we can do with it. So if you want, you can delete the XML, or if you want, you can comment it. So I will not delete it, I will comment it, because if I am pushing it to the GitHub, you guys can Control A, Control Shift slash. Entire file has been commented. So is this file, it is as good as this file is not there with me. So now from where will I get the configuration? So I'll make a new package. form.itp dot. Okay, and whatever we had over here application context, we can make a class for that. So to you should not conflict with any built-in class. So let's say I'll make the class as app context. Okay, to be my class. And now whatever bean you want to make. So if you want to make, let's say for this part, what was this? CDI using for engine, right? So we can name it. So here what I can do is I can, and the bean method should always be public. Bean method will always be so public, and this will give me what? This will give me a engine bean, and I will call it by engine CDI. What is the function name? Engine CDI. Control Shift O. This should return me an engine. So what we can do is we have done that over here. You guys are batch 3, right? So engine CDI has been made over here. Correct? Yes or no? So why not just use this code directly and return the my engine one? Correct? So this will work as good as this, but this is a bean, right? So similarly, make this into a bean by annotating at Control Shift O, import it from context annotation bean. Okay, and now when I go to my driver, okay, I'll make a new driver. Driver app for Java based beans. Okay. And now for this, we will need a separate class for the IOC container. Okay. So you can come here and take this one. Okay. The bean factory class will be different. So this will be the bean factory. Application context is annotation
config application context now. Okay, and for which class contains all the configurations, copy that class name and pass it as a parameter over here, and do a control shift O and import. Okay, got it now, the bean factor. Now we have to say get bean. Now here give the name of the method. Which method? The bean method name you have to give over here. You want bean for which method? And it will be of which class? Which class is this? Okay, and you can store it into a object. And now if I sys out my engine 1, what will happen? Right click, run as Java application console, and it is displaying me. So it has called the constructor. By default the bean is singleton bean. So is there, so if I go to the engine class, this bean is made using which constructor? All arg constructor. So this will be called, so engine all arg constructor called, and it is showing me the engine object also. Is that making sense? Correct. So now if I want to do using setter, how will I do it? Make a new bean, call as engine SDI. Now this engine will be made using no arg, and from where will I get the parameters? From here. Correct. Call it engine 2, whatever name you want to call it. Got it? Now if I want this bean, then do what? Engine SDI engine 2. You can give any name, okay? My engine 1, my engine 2. So this will call which constructor of the engine? No arg constructor. So we will not print anything, because there is nothing in the no arg constructor. Directly will print the to string. Correct? Right click, run as Java application. Directly will print the to string. Make sense? Okay. So this is making the engine first. So now if I request the engine CDI 2 times, 1 and 3, they both are calling whom? Engine CDI. So how many times will it call the all args constructor? 1 time, because by default the bean is singleton. So we'll call this will be called only once, and this will be displayed twice, right? And if I sys out are engine 1 and engine 2 pointed to the same address, will it give me true or false? 1 and 3. Will it give me true or false? Singleton bean, right?
So only the same object is being pointed by engine 1 and engine 3. So this should give me a true. So who can trace the output when at the time of IOC container loading? Engine all args constructor called, display the engine 2 string, display the engine 2 string, true, and display the engine 2 string. Let's run. Okay. Constructor called engine 2 string, true, engine 2. Now if I want separate one, that a separate object should be made for my engine 1 and a separate object will be made for my engine 3. Then I have to change the scope to prototype. How do I do that? So we can change the bean, which attribute is there? Scope. So I go to that bean over here and I say what? At the rate scope. And what scope? Prototype. Now what will happen once I give prototype? Now what will happen once I give prototype? At this time the thing will be called all args constructor called toString, all args constructor called toString false now. And how many times will it display all args constructor called? Twice. Because it's a prototype, no? For this, my engine 1 separate constructor, for my engine 3 separate constructor. They both are pointed to two individual objects, so the reference comparison will give you false. Okay. Right click, run as down. Okay, engine all arg constructor called, engine all arg constructor called, and this is false. Is that making sense? Okay. Now, if I don't want to give this name, engine CDI, and I want to give such names which I gave over here, like E1, E2, that's easy to remember, right? So we can go and change the name of the bean also. Name equals to E1. Name equals to E1. So instead of calling it by its method name now, I can directly call it by its name. What is it? E1. So I can directly go and say, give me the bean. E1. Give me the bean. E1. Will give the same output. Will give the same output. Is that making sense? So whatever we could do over here in the XML based approach, by creating an XML file, the same we could have done over here also. Okay. Now, as this file is containing all the configurations, you should annotate it with add configuration. So what? Add configuration. As it is a configuration file. Is this a business logic class? Is this class containing any business logic? This is just containing, what was this containing? Configuration. Now this configuration which was in the XML file has been replaced by a .java file. My app context now becomes my configuration. So annotated with @configuration. Does that make sense to you all? Okay. So now what if I want to make a car class, a bean? Now what if I want to make a car class का bean? ठीक है, तो मुझे यहाँ आके क्या करना पड़ेगा? एक बीन बनाना पड़ेगा. Let's say car CDI. तो मैं कार कर रहा हूँ, बना रहा हूँ किससे? मुझे क्या देगा? कार क्लास का ऑब्जेक्ट देगा. कंट्रोल शिफ्ट O,
वो हमारे पास इधर है, कार का सीढ़िया ये रहा, करेक्ट, वही ले लेते हैं। और क्या बोलते हैं, रिटर्न रिटर्न क्या, कार सीढ़ी, ठीक है। अब ये दो ऑब्जेक्ट हमारा है नहीं, है क्या, नहीं, ये कंस्ट्रक्टर है हमारे पास, ओके, रिटर्न माय कार ना, so these will be injected using which constructor of car, line number 23 और line number 13, पैरामीटर देखो कितने पैरामीटर पास किए मैंने, सिर्फ 4 किए, तो वो कौन से हैं, वो कौन से हैं, लाइक कंस्ट्रक्टर कौन सा, using this constructor, correct. Now what about these two then, so I will just say auto wired, एक एनोटेशन है क्या, ऑटो वायर था XML में, इसमें क्या है, ऑटो वायर्ड, बस सबसे ज्यादा यूज होने वाला एनोटेशन, ऑटो वायर्ड मतलब क्या, आपको कॉन्फ़िग बाय डिफॉल्ट ये ऑटो वायर बाय टाइप है, बाय डिफॉल्ट क्या, ये ऑटो वायर बाय टाइप, यानी आपको इंजन क्लास की और गेयर क्लास की जो भी बीन मिल जाए वो इंजेक्ट कर दो, तो यहाँ पर आएगा वो, तो कौन सी बीन मिलेगी इंजन की, इंजन CDI और इंजन SDI, अभी दो हो गए, और गियर तो है ही नहीं, तो गियर का ही बना लो, गियर का ही बना लेते हैं, गियर देगा, and bean has to be public, right, हाँ, क्या हो गया, ओके, अब अगर मैं ये कमेंट कर दूं, तो ऑटो वायर बाय टाइप में कोई प्रॉब्लम, क्यों, क्योंकि उसको एक ही बीन है इंजन का और एक ही बीन है गियर का, तो वह इंजेक्ट कर देगा, तो प्रिमिटिव्स को यहाँ से इंजेक्ट कर देगा, नॉन प्रिमिटिव का हमने क्या बोल दिया है डिपेंडेंसी इंजेक्शन में, कि ना whenever this class has any dependency I will auto wired it, I will do what, so I told you in the starting there are 3 types of dependency, CDI, SDI and ये auto wired है, तो आपको सिर्फ ऑटो वायर्ड करना है, वो खुद जाके कॉन्फिग से लेके आ जाएगा, सेव करते हैं और जाके फिर ड्राइवर में किसका लेना पड़ेगा अपने को, वो किसका, क्या नाम है उसका, कार सीरीज इज लुकिंग अ बिट नेम, तो हम उसका नाम चेंज कर देंगे, तो क्या देते हैं हम लोग, नेम दे देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आएंगे और क्या बोलेंगे, क्या चाहिए, कौन सा बीन चाहिए, वो किस टाइप के कौन से क्लास का है वो, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट भी कौन से कार का लगे, क्लास का लगेगा, हाँ, ठीक है, आप सेम नाम रख दो, कंट्रोल शिफ्ट ओ कर दो, और फिर किसको डिस्प्ले कर देंगे हम लोग, ऊपर का सारा कमेंट कर रहा हूँ मैं ताकि आउटपुट हमारा सिंगल लाइन में आ जाए। अब ऑटो वायर्ड क्या कर रहा है, जहां जहां उसको डिपेंडेंसी है वो कॉन्फ़िगरेशन में जाके पिकअप करके इंसर्ट कर रहा है, राइट, सेव ऑल हो गया, राइट क्लिक
रन एज जावा एप्लीकेशन एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। डाल दिया उसने, कौन सी कार है, होंडा सिटी ब्ला ब्ला ब्ला, इंजन डाल दिया वो वाला, और गियर डाल दिया ये वाला, करेक्ट। अब अगर दो इंजन होते तो ऑटो वायर्ड बाय नेम, है ना। अभी मेरे पास दो इंजन है क्या नहीं। तो इसका नाम मैंने रख दिया इंजन E1, और इसका नाम मैंने रख दिया इंजन E2 लेट। अब मेरे पास कितने इंजन है, दो। अब अगर रन करेंगे तो आएगा क्या आउटपुट, क्या आएगा वो, रिक्वायर्ड 1 एंड आई एम गेटिंग ऑप्शन 2, राइट। चेक कर लेते हैं। रन करने से पहले स्टॉप कर दिया करो, प्लेट साफ कर दिया करो, कंसोल को प्लेट साफ कर दिया करो। ठीक है, अब रखो, सेव ऑल हो गया। राइट क्लिक करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो कोड फटेगा। ठीक है, अब जाके पहले लाइन पे जाना, ये फर्स्ट लाइन है। हमेशा जब भी एरर आए तो फर्स्ट लाइन पढ़ लिया करो, क्या लिख रहा है, अनसेटिस्फाइड डिपेंडेंसी एक्सेप्शन, है ना। और क्या बोलेगा, हम लोग C1 का बीन नहीं बना पा रहे हैं। क्यों नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि आपने बोला ऑटो वायर्ड इंजन। तो मैं जब मैं इंजन के बीन की तलाश में निकला तो मुझे चाहिए थे एक बीन, मुझे मिल रहे कितने एलिजिबल कैंडिडेट, दो। तो मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। अनसेटिस्फाइड डिपेंडेंसी एक्सप्रेस टू फील्ड ITP इंजन नेस्टेड ब्ला 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 ब्ला, नो क्वालिफाइंग बाइन ऑफ दिस अवेलेबल, एक्सपेक्टेड सिंगल मैचिंग बट फाउंड टू। अब मुझे चाहिए E2 वाली, क्या चाहिए मुझे, तो एक, अभी सारा का सारा खेल एनोटेशन पे आएगा। अब से सारा का सारा खेल किस पे करना है आपको, तो था ना @ ओवरराइड, बस वैसे एनोटेशन पे आज से पूरा खेल शुरू होगा। तो हम क्या बोल देंगे फिर जाके कार क्लास में, कौन सा चाहिए, अभी इधर क्लैश हो गया ना, तो ये बाय डिफॉल्ट ऑटो वायर क्या कर रहा है, बाय टाइप, बाय नेम करना रहेगा तो एट क्वालिफायर क्या कर देगा, @ क्वालिफायर। और कौन सा बीन, अब बोल रहा है भाई मुझे E2 चाहिए, तो वो जाके तलाश करेगा, E2 बिन मिलेगा, उसको इंजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये डेडलॉक रिजॉल्व हो जाएगा। अब रन करके देखते हैं, तो द कोड शुड रन नाउ एंड इट शुड इंजेक्ट द E2 बीन। गुड, E2 बीन कौन सा है देख लो, इंजन 2 कौन सा है, टोयोटा डीजल इंजन, राइट। तो टोयोटा का डीजल इंजन इंजेक्ट कर दिया, गियर का ऑप्शन एक ही था तो उसको बाय टाइप ही रखा। तो जो काम हम वहां कर सकते थे वो सब काम हम लोग जावा से भी अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। समझ में आ रहा है।